Morning, students of grade 3. How are you all? So students, today we are going to continue our chapter number 4, okay, in your science book, safety and hygiene. We have been learning a lot of safety rules, okay, in the previous pages of this chapter. So today we are on page number 33. Here we are going to learn about first aid and hygiene, okay. So let's see what is the meaning of first aid and how we can use it and where we should use. So the immediate medical help given to an injured person is called first aid. अगर कहीं पे किसी की चोट लग जाती है अचानक से स्टूडेंट्स, सो उसको जो इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, मींस किसी की ब्लडिंग होने लगी या किसी के पेन हो रहा है तो उनकी हेल्प करना, मींस किसी के बैंडेड करना, ठीक है. सो ये सारी जो हैं इस तरह की हेल्प जो होती है दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है. Aid means help. So first aid box contains creams, lotions, bandages, etc. We must keep a first aid box at home, school and office. हर जगह हमें first aid box रखना ही चाहिए so that there should be no lack of first aid box. Okay. Children should not take first aid on their own. Okay. Children को खुद नहीं लेना चाहिए. They should call somebody else. They must approach an elder person to help them when they are hurt by a wound, sting, animal bite, etc. अगर ऐसा कुछ होता है, आपको कहीं चोट लग जाती है या एनिमल ने बाइट कर लिया या कोई तकलीफ़ हो गई आपके, तो आप किसी एल्डर को ही बुलाएंगे, किसी बड़े को बुलाएंगे, ख़ुद से कुछ नहीं करना है. ओके, बिकॉज यू आर सो यंगर ना, अभी आप बहुत छोटे हैं इसलिए. सो किसी एल्डर को बुलाएंगे और वो आपकी हेल्प करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड. ओके, यू शुड नॉट गेट फ्राइटन ऑफ फर्स्ट एड इफ़ यू आर हर्ट. आपको डरना नहीं चाहिए फर्स्ट एड अगर कोई कह रहा है आपसे कराने को, ठीक है. अगर चोट लग जाती है तो हमें डरना नहीं चाहिए कि तकलीफ़ होगी. फर्स्ट एड इज़ समथिंग दैट कैन हेल्प यू, ओके, दैट कैन हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम योर इंजरीज. ओके, आपकी जो इंजरी हो गई हैं उनको रिकवर करने में, उनको ठीक करने में हेल्प करता है. सो इट डजंट हर्ट यू. ओके, so you should comfort your friends if he or she is hurt and inform an adult. अगर किसी की चोट लग जाती है, अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड ट्राई टू मेक दैम फील कम्फर्ट. आप उनको थोड़ा कम्फर्ट लेवल में लेकर आइए. कैसे? उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए कि रिलैक्स रहिए, परेशान नहीं होइए, एंड अनटिल इतनी देर में आप किसी बड़े को भी बुला कर ले आइए, ठीक है, सो दैट दे कैन हेल्प यू. बैंडेड, कॉटन रोल, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्रीम, मेडिसिन टैबलेट्स, फर्स्ट एड बॉक्स आइटम, दीज ऑल आर फर्स्ट एड बॉक्स आइटम. ना लेट्स सी द हाइजीन. हाइजीन इज personal hygiene is very important. With a clean body, clean hair, clean clothes and shoes, you'll feel good and remain healthy. Hygiene means keeping clean. Okay, so hygiene is something which is related to the cleanliness. So personal hygiene is very important. Personal hygiene which we own, ठीक है, जो हमारी खुद की होती है हाइजीन, हमारी खुद की साफ़ सफाई. With a clean body, clean hair, clean clothes and shoes, you will feel good and remain healthy. You need to follow good habits of hygiene. Here are some tips. Brush your teeth twice a day, before breakfast and before going to bed. Okay? During the day, rinse your mouth after meal. This will prevent bad breath and cavities. Okay? So these things you have to follow. Take a bath every day to keep clean. Clothes get dirty and sweaty and dirt. Okay? Clothes get dirty with sweat and dirt. Change clothes frequently. Wear clean clothes. Wear a fresh set of uniform to school every day. If you have to wear a school uniform the next day too, then take it off as soon as you get home and hang it up to the air. Okay? Next is shoes and socks smell foul because of sweat. Keep your shoes in an open and airy area. area means where there is air. Okay, यहाँ पर हवा हो. And wear clean socks. If you have one pair of socks for school, then take them off as soon as you get home so that they can get dry out. Okay, keep your shoes clean by brushing, polishing and washing. Wash your hands after you use the toilet. Wash your feet well to leave once at least once a day. Okay, dry them carefully, especially between the toes.
You have sweat glands in your scalp too, so the oil, sweat and dead cells can make hair greasy and look dirty. So wash your hairs regularly with shampoo. Okay, so these all are the tips of hygiene. You have to follow all these. Okay, now chapter has been completed. The new words you have to read out by your own. Okay, and this is the summary. You have to try to do the reading of this summary and you have to try to understand this whole summary. Now try to do the exercises, okay, by your own first. आप पहले खुद कर लीजिए एक्सरसाइज. यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक ओनली, ओके, नॉट इन योर नोटबुक्स. So try to do this in your book only as I have completed here, and these answers also should be written like this over here, okay, not in anywhere place. So students, today you have to complete only these two exercises. Try to complete this and have a nice day.